exclusive session, a very short session on discussion of TIFR exam. You know, Tata Institute of Fundamental Research, that is one of the pioneer institute in the field of biology, and it does really amazing work. So those people who are interested in doing research and those who are aspiring to do MSc as well as PhD, they have to face this particular exam. And not only for the TIFR, but for many other institutes, you are eligible to apply if you qualify this exam. तो इस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, not all, some questions which were related to methods or those which were related to biochemistry, which I usually teach you in the normal academic sessions. तो हम उन questions की बात करेंगे. Let's directly move on to those questions which were related to biochemistry. There are questions from aptitude, there are questions from genetics, even from physics and chemistry, there are basic questions. So we are now moving on to questions which are related to biochemistry. So one question that you see here is, although not from biochemistry, but a question of physiology, I would say, and a little bit of general aptitude is required here in this question. यहाँ पर आप बहुत ही बेसिक सा एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है. इसमें कहा गया है कि spine of a neuron is approximately a sphere of a diameter 1 micrometer. So you know, basically neurons, they're made up of axons and these kind of structures. So if you believe this as a sphere, अगर आप इसको sphere मान के चल रहे हैं, which is having a diameter of approximately 1 micrometer. All right. So they're asking if the concentration of K plus within this spine is 150 millimolar. अगर इसके अंदर जो K plus ions हैं, potassium ions हैं, इनका concentration कितना है? 150 millimolar है. तो आपसे पूछा गया है कि उनका नंबर कितना होगा. तो अगर आपको ध्यान हो, हम रूटीन क्लासरूम में जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, so mole concepts helps us to find out the number from the given number of moles. But you know, this is the molarity or concentration. When you say 150 millimolar, that means 150 millimoles per liter. All right. So first you have to calculate the volume of this sphere in order to get the actual amount of K plus ions in moles. And once you get the number of moles, then the number of moles into Avogadro's number will give you the exact number of particles. Okay, so this is the formula that you are going to use, but first you have to calculate the number of moles, and for number of moles you need the volume. And here you need a very simple formula for the volume of sphere, that is 4 by 3 pi r cube. Okay, so 4 by 3 into 22 upon 7, that is value of pi, and then you have volume, that is 1 into 1 into 1 given by the radius. So 4 pi r cube, that gives you the total volume. इससे आपको volume मिल जाता है. और इससे फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे? This volume will come in micrometer cube. So either you can convert this into meter cube, या तो आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, और you can convert this into centimeter cube. आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए. The reason why I am saying so, because you need the volume in ml or liters. So usually 1 centimeter cube is equal to 1 ml, right? So accordingly you have to calculate. यहाँ से आपको जो volume आएगा उसको आप ml में convert कर लीजिए, and then you finally get the value or volume. Now amount or number of moles N can be given by 150 millimolar, that is concentration, divided by volume. And once you divide it by volume, then you get the exact quantity or value of N.
और जब आपको वैल्यू ऑफ n मिल जाती है, you multiply that with 6.022 into 10 to the power 23, and you are likely to get 5 into 10 to the power 7 as approximate answer. So that's a basic kind of chemistry question, or you can say biology question, biochemistry question. किसी भी domain में आप इसको relate कर सकते हैं. Now the second question, that is 42 number, that is very, very specific and highly related to biochemistry. So what this question is asking about, इस question में क्या पूछा गया है? They are actually talking about various kind of high energy molecules. आपने theory में पढ़ा होगा कि high energy molecules कौन से होते हैं? Those molecules which are capable of storing the energy in the form of chemical bonds. And many of us know that ATP is the energy currency, and it uses or stores the energy in the form of anhydride bonds, which are the phosphate linked to the adenosine molecule. Now, apart from ATP, there are other high energy molecules as well. For example, phosphoenol pyruvate, which is an intermediate of glycolysis. The second last one, 1,3-bisphosphoglycerate. This is also a glycolytic intermediate. Pyrophosphate. Now, pyrophosphate क्या होता है? Pyrophosphate is formed by breakdown of ATP into directly AMP. So when ATP breaks down into AMP, the molecule that is left out is called as pyrophosphate or PPI. This pyrophosphate is also a high energy molecule, and it can turn into phosphate and can emit high amount of energy. So now the question is, इसमें ये पूछा है कि इनमें energy का order क्या होगा? And they have given you ATP as P, PEP as Q, 1,3-bisphosphoglycerate as R, and pyrophosphate as S. So these four things have been given to you, and you are being asked that what is the average amount of energy. So usually the bond energy is represented by Gibbs free energy change or standard delta G value of the reaction. So hydrolysis of ATP is generally known to have energy somewhere around minus 7.2 kilocalories per mole. Okay, and that's approximately 32 kilojoules per mole. You can multiply it by 4.2, and then you can get values in kilojoules as well. So this is having an approximate value in 7.2. But if you look at the other things, for example, PEP, अगर आप PEP को देखेंगे, you will find that PEP is much more energetic in terms of the energy, and this has the delta G value of approximately minus 14.8 kilocalories. On the other hand, bisphosphoglycerate also has got a high amount of energy, that is minus 11.8 kilocalories per mole. Remember that I'm putting a minus sign. That doesn't mean the value is less, but minus sign means it is an exergonic reaction. So you don't have to compare in respect to the minus. You don't imagine कि ये minus है तो ये और छोटी value है, that is a larger value. No. You have to ignore the minus sign at this point of time, because this is representing exergonic mechanism, and only those reactions which are having the Gibbs energy negative, they are spontaneous. So similarly, pyrophosphate has got relatively lesser energy compared to the ATP. So now I think it is very clear from here that the highest amount of energy is present in phosphoenol pyruvate. So obviously Q should be having the highest energy. So you end up with option C or D. The first two are ruled out. And then the next one is, the second one is bisphosphoglycerate. That's correctly matched here. And now you have two options where you have SP or PS. So S, that is pyrophosphate, that is considered to have least amount of energy, and therefore this is the correct answer. You also have the exact values. So you have to basically remember the values, at least remember the energies of all the high energy bonds. जितने भी high energy bonds हैं उनकी energy आपको लगभग ध्यान रखनी पड़ेगी. करीब करीब 10-12 तरह के high energy molecules हैं, which also include some other molecules like cyclic AMP, carbamyl phosphate, phosphocreatinine, एसिटाइल फॉस्फेट, एसिटाइल कोएंजाइमेट. ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, और इनकी सबकी एनर्जी लगभग आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए in order to answer these kind of questions.
All right. Now come to the next question. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम. Now what this question says, let's see that. Let me clear everything what I have written so far. And then a question from enzymology. अब जो अगला क्वेश्चन है वो कहां से है? एंजाइमोलॉजी से. So you know, in case of enzyme, you have to use a very fundamental reaction equation, which is called as Michaelis-Menten equation, where velocity can be calculated as a function of maximum velocity and substrate concentration. So this formal equation, which is also called as Michaelis-Menten equation, is used for calculating velocities at different point of time. So what has been given, let's see that. पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. So they have given you Vmax, that is symbol is missing. I suppose it is micromolar. So 50 micromolar is the value of Vmax, and that is being formed per minute. Okay. And a Km of 10 micromolar. So Km value is given as 10. Now what they are asking, when a reaction mixture contains the enzyme and 5 micromolar, I'm guessing that it should be micromolar. You can cross check with the original paper. If it is micromolar, then we will calculate accordingly. तो अगर reaction mixture में reaction mixture जो है that contains enzyme और साथ ही साथ उसमें 5 micromolar substrate है, which of the following percentage of the maximum velocity will be closest to the initial rate of reaction? So basically we have to calculate the velocity at around 5 micromolar concentration. So you can see that 5 micromolar concentration is half of the value of Km. And you know that the Km is, जब Km के बराबर concentration होता है, you know, when substrate concentration is equal to Km, then velocity is half Vmax. Okay, ये तो आप जानते हो कि velocity Vmax का half होती है. So obviously this is not going to be the correct answer. ये आपका correct answer होगा नहीं. अगर यहाँ पर option 70 या 50 से ज्यादा दिए होते, then there straight away you could have answered it. आप बिना formula use किए, बिना calculations किए इस question को answer कर सकते थे. But right now what is there? They have given you the substrate concentration. तो substrate concentration आपको दिया हुआ है. That means you can calculate the V0. You can put the value of Vmax, that is 50, and you can put the value of substrate concentration and 10 plus 5. So what value do you get over here? It is approximately 750. Sorry, it should be 250 divided by 15. So what is 250 by 15? That is the velocity you will get. So let's use the calculator. 250 divided by 15, that gives you 16.6. Now look at the maximum velocity. So your maximum velocity was 50 and your actual velocity at the given substrate concentration is 16.6. So what fraction of Vmax this value is representing? So you can say 16.6 divided by, yes, 16.6 divided by 50 into 100, and that gives you approximately 33.33. So it is correct to say that when the substrate concentration is 5 millimolar, the reaction will be operating at 33%, or to be more precise, the precise answer is 33.3% of the Vmax. And if they ask you velocity instead of the proportion, you could have answered it as 16.6 micromolar per minute. So that is the velocity, and this is the fraction of maximum velocity, 33%. So this is how we calculate this answer. I think ये आपको समझ आ गया होगा. It's straight away dependent on Michaelis-Menten equation. Let's now move on to the next part. आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं. तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो
रिलेटेड है कीटो और इनॉल फॉर्म से. Now, before we go to the question, let us look at the meaning of keto and enol forms. So usually, nucleotides or nitrogenous bases, they have certain groups like double bond O, NH2, these kind of groups are present. Now this double bond O can pick up an adjacent proton. ये नजदीक वाले कार्बन से एक प्रोटॉन ले सकता है. And this O turns into OH, and because of the deficiency of H here, now a double bond is created over this place. So as far as this is double bond O, this form is called as keto form, and when there is a proton that shift onto this keto group, then it is called as enol form. And this keto enol transition is very common in most of the biomolecules, and even in chemistry में भी keto enol isomerism जो है बहुत कॉमन है. इसको टॉटोमेरिज्म भी कहा जाता है. तो ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म जो देखा जाता है ऐसे सारे ग्रुप्स में जिनमें डबल बॉन्ड O हो और नजदीक से कोई प्रोटॉन एक्सचेंज हो सकता हो, एंड दैट कैन बी सीन इन नाइट्रोजनस बेसिस एज वेल. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये जो कीटो फॉर्म है, यानी कि ग्वानिन की इन्होंने कीटो और इनॉल फॉर्म्स दी हुई है क्वेश्चन में. So let's enlarge it a bit. And I think now you can see keto and enol forms जो मैंने आपको बताया वैसे ही है. You can see here double bond O, NH, and this adjacent H is gone here. Now this becomes OH and this remains as N. So this is your keto form. यहाँ पर ये keto group है और यहाँ पर ये अब alcohol बन गया है double bond के साथ. So enol, en means double bond, ol means alcohol. So this has turned into enol, and they are saying that this transition is happening at the pH 7. Larger arrow on this side means this is more preferred form. Smaller arrow means this is less preferred form. ये जो है less preferred form होती है. Similarly, keto and enol forms of cytosine and thymine are also shown below. जिस तरह से guanosine की forms दिखाई है, ऐसे ही cytosine की भी आपने आयनाइजेशन फॉर्म्स दिखा दिए. बेसिकली यहाँ पर कीटो इनॉल नहीं है, ये शायद वर्ड इन्होंने गलत लिखा है. दिस इज अमीनो एंड इमिनो फॉर्म्स. सो दीज आर आल्सो टॉटोमेरिक फॉर्म्स. व्हाट हैपेंस इन अमीनो एंड इमिनो, अमीनो और इमिनो में क्या होता है कि जो NH2 ग्रुप है इसका प्रोटॉन एक्चुअली एडजेसेंट नाइट्रोजन पर आ सकता है. तो आप देख रहे हो ये अमीनो ग्रुप है और इसका एक प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन यहाँ पहुंच गया और उसकी वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया. तो साइटोसिन में अमीनो इमिनो ट्रांजिशन और थायमीन में कीटो इनॉल ट्रांजिशन हो सकता है. यू कैन अगेन सी हियर कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ये तो कॉमन सी बात है, अक्सर देखा जाता है नाइट्रोजनस बेसिस में इस तरह के ट्रांजिशंस होते रहते हैं. लेकिन क्वेश्चन क्या है, इस पर क्या क्वेश्चन राइज होता है? Which of the following bases will enol form of guanine most stably base pair with? अब आपको सिर्फ एक बात पूछी गई है कि आप ग्वानिन की इनॉल फॉर्म पर ध्यान दीजिए. दिस इज द इनॉल फॉर्म ऑफ ग्वानिन. ओके, अब ये पूछा गया है कि इनॉल फॉर्म ग्वानिन की जो है उससे इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा स्टेबल तरीके से बॉन्ड बनाएगी, यानी कि पेयर करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी. तो आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है यूजुअली. हाइड्रोजन बॉन्ड मान लो OH है, इसके सामने कोई दूसरा O आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. अगर NH है तो इसके सामने कोई N आ जाएगा या O आ जाएगा तब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, या फिर OH के सामने कभी कभी N आ जाएगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. सो दिस इज हाउ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर क्रिएटेड. Now just have a look that what kind of hydrogen bonds can be created and which of these molecules will be fitting best with the enol form of the guanine. So look at the enol form of guanine particularly. You have NH2 group here, you have a single nitrogen here, you have OH here, which are likely to be capable of making hydrogen bonds. ये चीजें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल होंगी. So you can say that NH2 will be behaving as a hydrogen donor. Similarly, OH will be behaving as a donor. So there will be one donor, and one acceptor that will take up the
hydrogen from either OH or NH on other side. So just look at this, आप इनॉल फॉर्म को देखो और किस फॉर्म में आपको लगता है कि इन तीनों को, यानी कि इसके सामने एक डोनर होना चाहिए. डोनर इज व्हाट? आइदर O और N. So O in the keto form or N in the imino form, they will be capable of becoming a donor here. यहाँ पर बीच में एक एक्सेप्टर होना चाहिए, बीच में एक डोनर होना चाहिए, यहाँ एक्सेप्टर होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? एक एक्सेप्टर होना चाहिए. So let's look at these structures. I mean, amino form of cytosine, imino form of cytosine, keto form of thymine, and enol form of thymine. Now check it out. आप देखो इसमें कौन सा सबसे अच्छा पेयर करेगा. Don't you think if you look at this form, so if you look at these three positions, इससे पेयर करने के लिए क्या चाहिए? This needs an acceptor on this side. मतलब एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन जिस पर H ना लगा हो. इसको चाहिए एक डोनर, बीच में एक डोनर होना चाहिए, यानी कि OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, they can behave as donor. और यहाँ पर NH2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर भी एक्सेप्टर चाहिए, कीटो फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और इम्यूनो फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, they can behave as एक्सेप्टर here. तो एक्सेप्टर, डोनर, एक्सेप्टर चाहिए. नाउ लुक एट दैट. अगर आप यहां पर तीनों मॉलिक्यूल्स को देखो, सो लेट मी मार्क देम ऑफ. दिस इज डोनर, दिस इज एक्सेप्टर, एंड दिस इज एक्सेप्टर. And this nitrogen here is a very poor acceptor. This hydrogen here is donor. This is an acceptor. Okay, remember what we need. एक बार फिर से बता देता हूं. हमें चाहिए क्या? जो इससे पेयर कर सके वो होना चाहिए एक्सेप्टर, डोनर, एक्सेप्टर. राइट? सो अभी तक हमें एक्सेप्टर, डोनर, एक्सेप्टर नहीं मिला है. यहां पर क्या है? सी, दिस इज एन एक्सेप्टर, this is a donor, and this is an acceptor. So this is exactly what we need: acceptor, donor, acceptor, acceptor, donor, acceptor. And this can fit very well. ये जाकर flip होकर इसके सामने आ सकता है. If you look at this, यहाँ पर भी क्या है? donor है, acceptor है, और यहाँ पर acceptor है. So none of these, I mean this or this is not capable of exactly or best pairing with this molecule. Rather, keto form of thymine is capable of pairing with this. So guanine की enol form से thymine की keto form सबसे अच्छी पेयर हो सकती है. यानी कि आप कह सकते हो G can pair with T. Now this seems unusual. थोड़ा सा unusual लगता है. What you know conventionally, आप क्या जानते हो कि G C से पेयर होता है और A T से पेयर होता है. ये आप जानते हो. तो ये तो थोड़ा ऑकवर्ड सा क्वेश्चन लग रहा है ना, क्योंकि आप तो अगर रैंडम देखोगे तो यही जानते हो, अच्छा जी तो सी के साथ पेयर होता है, तो जी की पेयरिंग तो सी के साथ होनी चाहिए, इनमें से किसी फॉर्म के साथ. यानी कि आप इनमें से किसी फॉर्म के साथ टिक कर दोगे आंसर को. लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है. नेचुरली अकरिंग ग्वानिन जो है वो इस फॉर्म में होता ही नहीं है, वो ज्यादातर इस फॉर्म में होता है. और जब वो इस फॉर्म में होता है तो उसके लिए cytosine is much better. But somehow if it changes or if it tautomerizes, then it is having ability to pair with something else. And this is something which is the foundation of several mutations. कई जगह जो डीएनए में म्यूटेशंस होते हैं या डीएनए में इंटरेक्शंस बदल जाते हैं, उनके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि कीटो इनॉल फॉर्म्स में इंटरकन्वर्जेंस हो सकते हैं. अगर ग्वानिन अपनी जो है कन्वेंशनल फॉर्म, जो उसकी कीटो फॉर्म है, उसको बदलकर इनॉल फॉर्म में आ जाता है, तो उसकी पेयरिंग एबिलिटीज बदल जाती हैं. और एक स्ट्रैंड में अगर कीटो के बजाय इनॉल ग्वानिन लगा रहेगा, तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा तो वहां पर प्रेफर क्या होगा? टी प्रेफर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ सी, और वहीं पर क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच यू शुड लर्न एंड विच यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. टॉटोमेरिज्म और टॉटोमेरिक शिफ्ट्स इन द नाइट्रोजनस बेसेस एंड हाउ दे चेंज द बेस पेयरिंग एबिलिटीज ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसेस. सो कन्वेंशनली व्हाट वी नो might change if there is a change in the tautomerism or tautomeric shift is there. So I hope this question is very clear to you. आपको ये question बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. If you wish, you can take the screenshot of this for the future reference
And remember how we find out the best match by looking at what is donor and what is acceptor. This is how we always look at that. So let's go to the next question. अब हम अगले question पर चलते हैं. If you wish, you can take the screenshot and then we can go to the next question. All right. तो अगले question पर चलते हैं. तो अगला question क्या है? अगला question फिर बायोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड है और ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिलेटेड टू रामचंद्रन प्लॉट. रामचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि आखिर रामचंद्रन प्लॉट होता क्या है. अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थ्योरी में आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली रामचंद्रन प्लॉट के बारे में. बेसिकली रामचंद्रन प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉर्जन एंगल्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ पेप्टाइड. जब एक पेप्टाइड बनता है तो आप जानते हो कि पेप्टाइड लिंकेज ये होती है. इसमें ये NH एक अमीनो एसिड का ग्रुप है, यहाँ पर C अल्फा है और बाकी सारी चीजें हैं, और ये जो कार्बोक्सी है ये दूसरे अमीनो एसिड का है, राइट. तो दो अमीनो एसिड इस लिंकेज के थ्रू जुड़ जाते हैं. दिस इज द लिंकेज व्हिच इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज. Now, this bond is almost, these four atoms are very rigid and fixed at their positions. They are in one plane. That's because of the partial delocalization of this bond. But there is a possibility of rotation across these two single bonds. यहाँ पर ये peptide rotation show करती है. And the bond across C alpha and C is commonly called as psi, whereas this bond is called as phi. Now, this is something that is responsible for change in the conformations or formation of different shapes of a peptide when they form elongated structures. Now, the point is that all the angles, हालांकि theoretically देखा जाए तो ये 0 से लेके 360 तक कहीं भी rotate हो सकता है, ये भी rotate हो सकता है. But all the angles, all the possibilities are not true because of the strain that is created. If there is a side chain, there is a potential hydrogen atom. So these side chains might interfere with oxygen. Hydrogen might come close to the oxygen. So due to interference, not every angle is allowed. Only few angles are allowed, which are generally represented by a shaded region on the Ramachandran plot. तो प्रोफेसर GN रामचंद्रन ने इन एंगल्स का एनालिसिस करके ये पता किया था कि कौन से एंगल प्रोटीन्स में एक्चुअली हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं. एंड देन ही प्रेडिक्टेड कि हाँ, आप यहाँ पर 0 डिग्री से +180 तक जाओ, इधर -180 तक जाओ, सिमिलरली इसमें 0 से +180 और -180 जाओ. तो कौन से एंगल अलाउड होंगे और कौन से कभी अलाउड नहीं होंगे, उनके लिए उन्होंने इसमें रीजन डिफाइन कर दिया. And this is a typical Ramachandran plot for dialanine molecule, where you have some region that is allowed here, some allowed here, some allowed here, and most of the region is empty. That means those angles will never be allowed. That means if I put a dot here, or maybe somewhere in between, so this is showing me that value of pi is +90 and value of psi is -90. So if I ask you whether +90 phi and -90 psi can be present in protein, answer is no, because this is lying outside the allowed region. Okay, so this is the concept of Ramachandran plot in brief. डिटेल में आप थ्योरी क्लासेस में पढ़ सकते हो, अटेंड कर सकते हो लेक्चर्स, तो वहां आप देख सकते हो इसका डिटेल्ड वर्जन, लेकिन ब्रीफ कॉन्सेप्ट यही है. तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किया गया, इन्होंने इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर जो बैकबोन का अमीनो ग्रुप होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में, प्राइमरी अमीनो ग्रुप, सो बैकबोन का अमीनो उसी को बोलते हैं प्राइमरी अमीनो को. अगर साइड चेन का अमीनो होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो कुछ ही अमीनो एसिड्स में होता है जैसे कि लाइसिन में. तो इन्होंने कहा है कि प्राइमरी अमीनो ग्रुप को मॉडिफाई कर दिया NHCH3 में. नाउ दिस विल नॉट बी NH2 व्हेन इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड, बट दिस विल बी CH3 linked. यहां पर एक क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया आप. So obviously when there will be CH3, then during the peptide bond formation this hydrogen will go away, and this is how
the peptide linkage will be formed. Peptide linkage अभी भी बनेगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, CH3 होगा। और मैं इसको थोड़ा और बेटर वे में बना देता हूं। Let's put it here. So imagine here it was hydrogen earlier in the normal condition, but now there is CH3. तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब इन बॉन्ड्स को रोटेट करेंगे तो इनके रोटेशन से ये हाइड्रोजन कभी इसके पास आ जाता है, कभी ये एल्काइल हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, कभी साइड चेन इंटरफेयर करेगी। तो अब यहाँ पर एक छोटे एटम के बजाय आपने एक बड़ा एटम लगा दिया, यानी कि जब आप इसको रोटेट करोगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी, ज्यादा हिंड्रेंस आएगी। यानी कि जो एंगल पहले ज्यादा अलाउड थे वो भी अब अलाउड नहीं रहेंगे, जो नहीं अलाउड थे वो तो नहीं अलाउड होंगे, लेकिन जो अलाउड थे वो भी अब अलाउड नहीं रहेंगे। तो ये अलाउड रीजन अब श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब कम एंगल्स ही अलाउड होंगे बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, अलाउड रीजन रिमेन अनचेंज्ड, नहीं, अलाउड रीजन अनचेंज क्यों रहेगा, हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। अलाउड रीजन श्रिंक्स, यस ऑफ कोर्स, एक्सपेंड होने का चांस ही नहीं है। एक्सपेंड कब होगा, जब आप अमीनो एसिड बदल दो, ये साइड चेन और हल्की कर दो, एलानिन के जगह ग्लाइसिन ले लो, बड़े अमीनो एसिड्स की जगह छोटे अमीनो एसिड ले लो। तो ग्लाइसिन का आप रामचंद्रन प्लॉट देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा अलाउड रीजन होता है, दैट हैज गॉट अ लॉट ऑफ अलाउड रीजन। तो ग्लाइसिन यूज करने पर एक्सपैंड होता है, और अगर आप यहां पर सब्सटीट्यूएंट लगा देते हो तो श्रिंक होगा। तो ये ऑप्शन भी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक अमीनो एसिड साइड चेन। ये बात ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग अमीनो एसिड्स पर, हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग तरह का रामचंद्रन प्लॉट होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो पार्शियली करेक्ट, ये पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अमीनो ग्रुप लगा देने पर इन जनरल अलाउड रीजन श्रिंक होगा ही होगा। और ये अलग बात है कि साइड चेन अलग होंगी तो थोड़ा बहुत श्रिंकेज या एक्चुअल ग्राफ में अंतर होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, but yes, there will be a general shrinkage, overall shrinkage in the structure. So this statement is also correct, partially correct, but the correct answer is still B. So I think that's all on questions of, if you wish to take screenshot you can do. This is all the kind of questions that have appeared in biochemistry. And remember that this is not the only portion that comes in TIFR exam. You have to be well versed with many other kind of questions like physiology questions. Carbon dioxide in blood is mostly translocated in the form of एल्बुमिन के साथ बाइंड होकर, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, मायोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, या फिर कार्बोनिक एसिड बनकर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरह से ट्रांसफर होती है, डिसॉल्व होकर भी, और कुछ पोर्शन हीमोग्लोबिन से भी बाइंड होता है उसके अमीनो टर्मिनल से, बट दैट इज वेरी लिटिल परसेंटेज। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप देखेंगे टेक्सोनॉमी से भी क्वेश्चंस हैं which are related to taxonomy. Then there are some questions related to I mean biochemistry and molecular biology. For example, you can just look at this question, इसको देख सकते हो आप। यहाँ पर कहा गया है कि one molecule of a small RAS like GTPase of 22 kilodalton form a strong high affinity complex with one molecule of GTPase activating protein gap के साथ RAS की binding होती है जो 50 kilodalton का है। The complex was analyzed using size exclusion chromatography and the profile is shown below. The peak 1 to 3 labeled in the profile were analyzed on SDS page gel. How many bands do you expect to see on SDS page? Profile for the 3 lanes corresponding to peak 1, 2 and 3 under the reducing conditions. तो देखो reducing conditions में इन्होंने 3 lanes बनाई हैं, 1, 2 and 3. So what do you mean by 1, 2 and 3? इससे क्या समझते हो आप? जब आपने साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की, यानी कि आपको 3 कॉम्प्लेक्सेस मिले, 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस मिले, तो इसमें क्या 3 कॉम्प्लेक्सेस कैसे मिले? एक जो है फ्री जीटीपीएस का होगा, एक जो है जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन का होगा, और एक क्या होगा, इनके कॉम्प्लेक्स का होगा which will be bigger than the 2. So that's why you are getting 3 molecules. And if you look at the I mean phenomena of chromatography, so if you are doing size exclusion chromatography, normally what happens, the larger molecules they come out first in size exclusion chromatography and smaller molecules come in the end. So
if volume is representing time scale, that means third is the molecule that is coming in the end, this is coming in between, and one is the molecule that is coming in the beginning, right? So this is the meaning of the size exclusion chromatography. And you have been asked that what kind of bands you are getting. So peak 1 represents how many bands? पीक 1 का क्या मतलब है, पीक 2 का क्या मतलब है, पीक 3 का क्या मतलब है? तो पीक 3 जो है वो सबसे लास्ट में आई है। तो मैंने कहा कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में हमेशा सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, तो पीक 3 में इसीलिए 22 किलो डाल्टन यानी कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल आया, राइट? जबकि पीक 2 की अगर बात करें तो पीक 2 कौन सी होगी? पीक 2 विल बी रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल मॉलिक्यूल, लेकिन पीक 1 विल बी रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। पीक 1 वुड बी रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। जब आप उसको जेल पर चलाओगे देन देयर विल बी 50 एंड 22 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि दो जो असेंबली है, दैट इज द असेंबली ऑफ GTPase एंड गैप, ये दोनों जुड़ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन डिपिक्ट, आई मीन I said that larger molecules come out first. So let's say this is gap, which is of 50 kilodalton, and let's say this is RAS. This is just 22 kilodalton. So this is representing a complex of both, whereas the one that comes in the end, जो सबसे बाद में आ रहा है, that is likely to be the smaller molecule. ये 22 kilodalton का होगा, ये सिर्फ RAS होगा, और जो बीच में आ रहा है ये क्या होगा? इट विल बी ओनली गैप। अब आप जब जेल पर चलाओगे तो जेल पर इन्होंने यही कहा है कि जब इस बैंड के प्रोटीन को लेकर एसडीएस पेज पर चलाओगे आप तो क्या होगा? तो उस समय ये 22 किलो डाल्टन का दिखाएगा। जब इस वाले बैंड को लेकर, सेकेंड बैंड को लेकर आप जेल पर चलाओगे तो ये कैसा दिखेगा? दिस विल बिकम 50 किलो डाल्टन। लेकिन जब इसको आप रन करोगे तो ऑब्वियसली इट हैज गॉट 2 प्रोटीन्स इन इट, और जब आप रिड्यूसिंग कंडीशंस में एसडीएस पेज कर रहे हो, यानी कि आप इनके एसोसिएशन को तोड़ दे रहे हो, तो ये अलग अलग बैंड्स के फॉर्म में, यानी कि 22 और 50 के फॉर्म में आएगा। सो दिस इज हाउ you will be able to analyze that how RAS, GTPase and these two molecules are interacting. तो ये interaction check करने का एक बेसिक सा तरीका है through the SDS page and size exclusion chromatography. ये ध्यान रखो कि size exclusion chromatography में सबसे पहले first to come is the large molecule, जबकि gel electrophoresis में fastest to move is smallest. छोटे मॉलिक्यूल फास्ट मूव करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल धीरे मूव करते हैं। सो दिस डिफरेंस इज की टू आंसरिंग दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब है क्रोमेटोग्राफी में कितना लिक्विड मूव कर गया तब जाके वो मटेरियल निकला। तो वॉल्यूम इज करस्पॉन्डिंग टू टाइम। जो पीक लास्ट में आ रही है यानी कि वो चीज बाद में आई है, ये चीज पहले निकली है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दोस थिंग्स। So this is how you interpret most of the things, and I think that was all. टेक्निक्स और बायोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे इसी कॉन्टेक्स्ट से थे, एंड आई होप यू विल बी प्रिपेयरिंग मच बेटर। ये क्वेश्चंस आपके और भी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट और एनी अदर एग्जाम, सो doing the practice of TIFR questions will be really very helpful to you. That's all for today. See you in another class. Thank you very much.